look at the number of plots held in inventory. You see, there is can you kindly sir check kar le कि is it are we online? Are we online? ठीक मुझे लग रहा सो यहां देखिए जो आपके नंबर ऑफ प्लॉट्स हेल्ड इन इन्वेंट्री है वो देखिए दे हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली और इसमें हमें 140% इंक्रीज नजर आ रहा है और उसकी वजह क्या है जब रिसेशन में प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिरी तो उसके डायरेक्टर्स ने उसमें हैविली इन्वेस्ट किया और उसको यूज किया और यहां पर भी हमें नजर आ रहा है दैट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विच इज शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 50%. वो नेचुरली आपने जो प्लॉट्स खरीदे हैं उसमें से कुछ बिके भी तो है ना तो बाकी जो हमारे पास पड़े हुए हैं दैट इज इन द इन्वेंट्री. The acquisition was financed through bank loan under a covenant that the entire loan will be immediately repayable if the gearing level at the book value exceeds 65% of any time. Beta, can you calculate the gearing ratio of this company in 2019 and can you calculate it for 2021? आपके पास बैंक लोन दिया गया है शेयर कैपिटल दिया गया है रिटेन्ड अर्निंग्स दी गई हैं. Can you calculate? It is 18 plus 500 plus 20,000. उसमें 18,000 divided by the total figure. देखिए क्या percentage आती है. It should be 47%. Huh? So gearing ratio is 47% in 2019. कैसे calculate की है? ये तीन figures मेरी total figure है. There is a total available. उसमें से 18,000 is through the bank loan. अब जरा 18,000 को divide कीजिए इस total figure से. That is 38,500. ठीक है तो it is 47 and the gearing ratio is. अब अगर इस point को आपने discuss करना हो ये जरा दोबारा देखें ये जितना भी हमने इन्वेंट्री में इंक्रीज किया इट वाज फाइनेंस थ्रू बैंक और बैंक का कॉन्वेनेंट कंडीशन क्या थी कि अगर ये गेयरिंग रेशियो 65 से ऊपर गई तो हम फौरी तौर पर अपना लोन रिकॉल कर लेंगे. अभी हम उसके सेफ लिमिट में हैं. अभी हमारी गेयरिंग रेशियो 47 से 61% पर गई है बट वी कैन नॉट अफोर्ड आइदर देयर इज अ डिक्रीज इन इक्विटी और देयर इज एन इंक्रीज इन योर डेट फाइनेंसिंग. इफ दैट हैपेंस and the gearing ratio goes above 65, the bank is likely to recall their debts. Is this point clear to everyone? ठीक है अब देखिए आगे. Transformation from traditional marketing to digital marketing strategy. The marketing team has taken various measures to communicate the unique designs and the features that DHL has been offering to the targeted customers. नहीं इसी आपसे पूछा मुझे शक हो रहा था कुछ. पीछे से इंटरनेट
जी इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट सर्विसेज डिस्कनेक्ट। हाँ जी। हेलो। इंटरनेट नहीं चलता। वो बंद हो रही है। ठीक है।
सर आपको माइक नहीं दे काफी वार्निंग है Okay, sorry. It's okay now? हाँ जी We are sorry for this issue. We had some internet issues and probably due to which this voice could not get to the people at different stations. So we are discussing here how to use the different data here. जी जरा इसमें अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालिए. हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि जो डेटा हमारे पास दिया गया है हाउ वी कैन यूज दैट. रेवेन्यू को हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है बेटा, बी विद मी फॉर फ्यू मिनट्स. हमने कहा रेवेन्यू में इंक्रीज जो 52% है उसकी मेन वजह क्या है. दो वजूहात हमें नजर आ रही है. इंडस्ट्री में इंक्रीज बाय 25% प्लस हमने डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट किया. वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसने हमारी मार्केट को इंक्रीज किया. कॉस्ट ऑफ सेल्स 14% इंक्रीज है. आपके लास्ट पैराग्राफ में यहां दिया गया कि एक रॉ मटेरियल शॉर्ट हुआ, हमने उसका ऑल्टरनेट इंपोर्ट किया और उस ऑल्टरनेट की वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई. We can calculate the gross profit margins, in which direction they are moving. Can you calculate the gross profit margins, please, for me? All present here and online. Can you kindly calculate the gross profit margins and see how we are doing on the gross profits? जी 219 में कितने परसेंटेज? 30
30. I can't hear you. 33. Okay. And what about 21? Sorry, 15. 50. So that means the gross profit margin has increased. That means increase in sales has been greater than the increase in cost. अब वो हमें नजर आ रहा है 52% increase और cost में increase 14% है, जिसकी वजह से हमारे जो profit margins available है. Now gross profit margins are giving us a greater margin to cover our administrative expenses and give us greater operating profit so that we have a greater interest coverage ratio. Can you calculate the interest coverage ratio? आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, कंपेयर इट विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट. It should increase from 6.7 times to 8.4 times. ठीक है? So what about interest coverage? It has improved. जी बेटा, are you able to calculate or not? Sorry? नहीं, परसेंटेज में टाइम्स में निकालनी है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप डिवाइड कीजिए बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 11,450 डिवाइड कीजिए 1.70 से. कितना आया? नहीं बेटा, 667 कैसे आ सकता है? 11,450 को डिवाइड कीजिए बाय 1710. 6.7 times. ये रेशियो में से टाइम है. That is, we have profit available through which we can pay our interest expenses by 6.7 times. It's a very good coverage. Let's calculate it for 2021, which is the recovery period. Yes, 8.4 times. तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी गेयरिंग रेशियो खराब हुई, लेकिन हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ने इतना मार्जिन हमें दे दिया था कि उससे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से इतना मार्जिन हमें मिल गया कि हम इंक्रीज गेयरिंग रेशियो की कॉस्ट को भी फिलहाल कवर कर रहे हैं. आई वांट यू टू इंटीग्रेट द फिगर्स. आई वांट यू टू टेक एवरी फिगर गिवन इन दिस डेटा. अच्छा, इसके बाद देखिए मार्केटिंग एक्सपेंसेस में आपको इंक्रीज नजर आ रहा है बाय 50%. व्हाट कुड बी द रीजन? डिजिटल मार्केटिंग. विद डिजिटल मार्केटिंग में जो आपने बैनर्स पोस्ट करने हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज द रीजन फॉर इंक्रीज इन द मार्केटिंग एक्सपेंसेस. देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, नेचुरली जब आपके पास इन्वेंट्री बढ़ रही है, आपके ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, तो दैट इज वेरी रीजनेबल दैट दीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दोज increase in operations. फिर यहां पर अब आप देखिए इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हुई है बाय 50%, एंड दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि आपने जब वो प्लॉट की प्राइसेस गिरी, रिसेशन आया, 40% से प्राइसेस डिक्रीज हुई, तो यू परचेज सम प्लॉट्स, और वो प्लॉट्स है और वो आपने देखा कि 1000 से 2400 पे चले गए, 140% इंक्रीज आया. उसमें से कुछ आपके पास होंगे, कुछ बिक गए, सो यू हैव द इन्वेंट्री अवेलेबल विद यू, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर द इंक्रीज इन वैल्यू. हमने ऑलरेडी बैंक लोन्स को, शेयर कैपिटल को, रिटेन अर्निंग्स को यहाँ पर यूज कर लिया. अब व्हाट यहां पर अब हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस है बैंक लोन की और ये बाकी बैलेंस शीट की फिगर्स दिए हैं, तो मुझे बताइए कोई ऐसी चीज आप यहां पर उसमें इंटीग्रेट कर सकें.
बैंक लोन्स आर स्टैंडिंग एट 40,000. अगर ये गेयरिंग रेशियो इससे ऊपर चली जाती है and loans have to be repaid, tell me from the balance sheet figures what factors will be available with you to repay those debts. एक तो आप जो प्लॉट्स की इन्वेंट्री है उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है. दूसरा देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स. You have retained earnings available which you can use to repay those debts. So you have sufficient sources available in case your gearing ratio goes beyond that and you need to repay the debts. You have your inventory available with you. You have your retained earnings available with you. You can use them to settle your debts. Is that point clear? ठीक है. इसी तरह आप देखिए नंबर ऑफ हाउस होल्ड, इसको हमने देख लिया. नंबर प्लॉट्स भी हमारे पास आ गए. अब कैन यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच होम? सो आपके पास रेवेन्यू दिया हुआ है 570 इज हाउस होल्ड, डिवाइड करें एंड सी व्हाट इज द पर हाउस प्राइस. इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. ठीक है. तो अब यहां इसकी इंटरप्रिटेशन पूरी सुनिए. रेवेन्यू में इंक्रीज जितना होना चाहिए था हमने अचीव नहीं किया. इंडस्ट्री 25% से ग्रो कर रही थी. हमारी डिमांड, हमारी जो सेल्स है वो सिर्फ 14% से ग्रो की. रेवेन्यू में इंक्रीज क्वांटिटी की वजह से नहीं आया, बल्कि जो इन्फ्लेशन इंक्रीज था दैट वाज इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस. उसकी वजह से there is a main factor which caused increase in the revenue. क्योंकि क्वांटिटी में हम उसको इतना इंक्रीज नहीं कर सकते. तो वो जो वैल्यू निकाली, पर हाउस वैल्यू आपने निकाला, उसको यूज करें और कोट करें कि ये वो फैक्टर है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीज इन योर रेवेन्यू. अदरवाइज क्वांटिटी वाज नॉट अ फैक्टर. Is the point clear to everyone in the class? ठीक है बेटा? ठीक है. What is the skill? आज भी और कल जो मैंने आपको, there is no figure given in the data which is irrelevant. You have to ensure, जैसे कल बताया था, टिक करते चले जाए, क्या आपने इस फिगर को कहीं इस्तेमाल कर लिया है या नहीं. फिर आपको मैंने कल भी दिखाया, there are separate marks for the calculations. There are separate marks for using different ratios for your interpretation. अब रेशियो कौन सी एप्लीकेबल करनी है वो आपके कॉन्सेप्ट पर है, क्योंकि ये दो फिगर्स दी हों तो मैं कौन सी रेशियो यहां पर ला सकता हूं. जैसे इंटरेस्ट कवरेज आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया, यहां पर गियरिंग रेशियो आ गई, यहां पर उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं इस डेटा के साथ, वो अब आपकी स्किल पर. अब मैं इसके जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है उसकी तरफ आ जाता हूं. पहला जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया, दैट वाज द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. 12 months का हमने प्रॉमिस किया था, उसमें अब डिले आया है, तो नेचुरली दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनीज गुडविल, इट्स रिप्यूट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स कंपेटिटिव एडवांटेज. दूसरा, it is branding itself as a developer of premium luxurious homes. यहां पर अब इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी इसमें अब जो इंक्रीज इन कॉस्ट है उसको पास ऑन कर रही है टू द कस्टमर. वो जो चेंज इन डिजाइन था, पहले कस्टमर को चार्ज नहीं किया जाता था, लेकिन अब कंपनी वो पास ऑन कर रही है to the customer. That is a non-financial measure which may ultimately affect the company's repute. And mind it, इसका जो customer है वो sensitive customer है जो कि luxurious projects में invest कर रहा है, and he may be offended by that. कि जी why this cost is being charged on, whereas ये उसकी value addition cost नहीं है. अगर वो value addition होता उसकी facilities पे, तो ये customer उसके afford के लिए इसको pay करता है. ये नॉन वैल्यू एडेड एक्सपेंस है जो उसको चार्ज किया जा रहा है क्योंकि इसको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ा. तो जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था, ये इसके जो नॉन फाइनेंशियल है इसके 6 मार्क्स थे और हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, सो इट इज ऑलमोस्ट 3 मार्क्स
2 मार्क्स ही, तो 3 तकरीबन इसके पॉइंट्स हैं। पहला ये था कि इसमें जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो बहुत अच्छी थी कि जब रिसेशन हुआ तो हमने 40% लो प्राइस पर जितने प्लॉट्स हो सकते थे उसकी इन्वेंट्री को पाइल अप कर लिया। दूसरे मैंने आपके साथ 2 पॉइंट्स क्लियर के लिए, एक इसके ब्रांडिंग का, दूसरा इसके टाइमली कंप्लीशन का। सो देयर आर 3 पॉइंट्स, so it is 2 marks each that will take you to 6 marks. 2 are very, very evident. Any question before we move on to the next one? ये मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कल हो सके तो इसको हल करें, लेकर आए, देखें आप किस तरह एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, उसका फ्लो है, उसकी लॉजिक है, वो बन रही है या नहीं बन रही, सो दैट आई कैन गाइड यू कि आपके लिखने का जो तरीकाकार है वो सही है या नहीं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4। अब ये वही क्वेश्चन है जो कल हमने एथिकल रेजोल्यूशन पर किया था, और मैंने कहा था द सिंपल थिंग दैट यू रिक्वायर फॉर सच क्वेश्चंस इज योर कॉमन सेंस। Kashan FCA has recently retired as CEO from Falcon Private Limited. Ultimately हमारे ऊपर इस फैक्ट का, इस इंफॉर्मेशन का एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो जो इस वक्त शख्स है जिसके मुतालिक हम बात करें, काशान, वो अपनी जो रेगुलर सर्विस है वो कंप्लीट कर चुका है, and he has gone through the retirement age, so he must be pressed with certain things and he may go for certain benefits जो अगर वो शायद रेगुलरिटी से वो एक्सेप्ट ना करता हो। तो अब ये देख लीजिए वो किस कंपनी में था, Falcon Private Limited, having reputation for good business practices. Falcon Private Limited has been the tax client of Epitome Consultants EC for over 10 years. तो 2 फर्म्स यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, एक Falcon Private Limited और एक EC. The senior tax partner of EC, I.C.A.P, who has also been the tax partner of Falcon Private Limited, approached Kashan to join them as HR partner and also proactively supported his appointment. अब ये याद रखें कि जो काशान है जिस फर्म में जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, वो जो पार्टनर है आसिफ, क्योंकि इसका एक रोल है, वो शख्स है जो उसको उस फर्म के अंदर इंडक्ट कर रहा है, और काशान कौन है जो अपनी रिटायरमेंट के बाद इस फर्म को ज्वाइन कर रहा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जो शख्स आपको लेकर आ रहा है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, उसी के खिलाफ अगर कोई बात है तो उसको रिवील करना, और ऐसा ही कोई इशू होगा जो इसके अंदर अभी आएगा। Kashan found the position and pay attractive and joined EC. And remember, this is after he has retired from his routine. In the recent partners meeting, Kashan has been assigned a task to reason out the high staff turnover with suggested improvements. लोग जल्दी छोड़ के जा रहे हैं, उसे कहा गया जी पता करो, HR पार्टनर हो तो ये इसकी वजह पीछे क्या है। The investigation has revealed that tax department has highest staff turnover, and who is the tax partner? Asif. Mainly because of aggressive nature of Asif, who often gets offensive and has even fired some staff members because of difference of opinion with him. So he's not been objective, he's biased. उससे difference of opinion हुआ, उसने एक objective decision नहीं ली, biased decision लिया और उसको फारिग कर दिया। Kashan has informally discussed Asif's behavior with another partner, who advised him not to include this matter in his finding reports for next partners meeting. He informed that Asif is a senior partner and usually has final say in all the key matters, and one of which was to induct Kashan. And he might not appreciate Kashan's bringing the matter of his behavior in the partners meeting. अब 2 जगह पर इशू आ रहा है, एक तो काशान उसने रिपोर्ट करना है, उसके साथ एथिकल कंसिडरेशंस हैं, एक वो आसिफ जो शायद प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं कर रहा
उसके साथ भी एथिकल इश्यूज है। अब आइए क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है, डिस्कस द थ्रेट्स to compliance with fundamental principle of ethics that Kashan might be subject to। ठीक है, एक तो ये एंगल हो गया। अब दूसरा सवाल भी देख लीजिए, explain the fundamental principles of I.C.A.P's code of ethics that I.C.A.P may be compromising। तो दोनों के ethical consideration यहां उन्होंने पूछ लिए, I.C.A.P के भी और Kashan। Also explain these principles from the perspective of Kashan if he agrees not to include the matter of I.C.A.P's aggressive behavior in his finding reports for the next partners meeting। तो सेकंड सवाल क्वेश्चन इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। उसमें अपने I.C.A.P की जो कोड ऑफ एथिक्स हैं अकाउंटेंट्स के लिए, जो IFSC ने उन्हें दिए हुए हैं, उसके मुतालिक आपने दोनों पर्सपेक्टिव से बात करनी है, I.C.A.P के मुतालिक भी और काशान के मुतालिक भी। लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट इट। Here we have 6 marks available. So it is 2 marks for identification and explanation of each threat. So that means there are almost about 3 threats here. And ye yaad rakhiye, this is, we are talking from the perspective of Kashan. Pehla kya hai? Self-interest threat. He was approached after his retirement, and what he has been offered has been very attractive. These are the personal interests of Kashan, and he may be this may discourage him in making a rational decision or presenting a matter in the next partners meeting. उसका self interest है, उसमें वो intensity भी दिखा दी कि वो retirement age के बाद जा रहा है, उसमें intensity दिखा दी कि बहुत अच्छा reward है। तो अब उसमें हो सकता है कि वो अपने self interest की वजह से वो उस चीज को डिस्क्लोज ना करे। हमने सिर्फ थ्रेट्स बताया। Then familiarity threat. Familiarity threat क्या है? The person bringing him is one who he approached Kashan and he proactively supported his admission into the firm. So there is a familiarity threat. तीसरा, intimidation threat. वो intimidation threat खौफ क्या है कि जी he is the one who's taking on the major decisions, so this may have certain consequences for him. तो 3 threats हैं जो काशान यहाँ फेस कर रहा है। एक तो सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरा familiarity और तीसरा intimidation. What are the learning outcomes? Whenever it is, there are 3 types of threats. It is intimidation, then you have familiarity threats, and then you have the self-interest threats. ठीक है, clear होगी बात? Do we have any questions on this area? Okay. अब आइए, सबसे पहले यहां पर उसने कहा explain the fundamental principles. अब आपने देखा स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। एक्सप्लेन में आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स हैं और फिर उसके एक्सप्लेनेशन के मार्क्स हैं। यहां पर भी देखिए 2 मार्क्स उसने आइडेंटिफिकेशन के रखे हैं एंड अबाउट 7 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। व्हाट आर दोस? पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, they are the one who has been covered here. ठीक है, ये कल भी हमने एक सवाल किया था, उसके अंदर जो I.C.A.P के प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है उसको हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? बायस्ड डिसीजन नहीं लेना। और यहां पर क्या है? आसिफ इज गेटिंग बायस्ड, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, उसने उसको निकाल दिया। सो दैट इज द फर्स्ट थ्रेड ही इज एक्सपोज्ड टू। दूसरा क्या है? द प्रोफेशनल बिहेवियर, एंड दैट इज द एग्रेसिव नेचर। He gets offensive with the staff. As a chartered accountant, as an accountant, he's not changing his behavior while interacting with people, especially those who are his subordinates. अगर काशान ये चीज करता है तो प्रोफेशनल बिहेवियर शो नहीं करता, तो याद रखिए this will be the breach of the
तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट, तो दो हमारे पास आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिविटी दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आसिफ, एक ऑब्जेक्टिविटी, और दूसरा है उसका प्रोफेशनल बिहेवियर। ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, वो पर्सनल बेसिस पर डिसीजन ले रहा है, बायस ले रहा है, और प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या है, इज गेटिंग अग्रेसिव, इज गेटिंग ऑफेंसिव। ये तो हो गया आसिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दो एथिकल इशू। अगर यही चीज अब काशान रिपोर्ट नहीं करता तो आई.C.A.P का जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको कैसे इफेक्ट करे? पहला है उस पर इंटेग्रिटी, दैट इज he should not omit the material facts. He should report what is there, what he has, whatever his findings are. Then objectivity, he should not be biased. Personal bias नहीं होना कि जी मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, या पर्सनल बायस नहीं होता कि मैंने उस शख्स को जानता हूं, उसे एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना है जो कि बायस डिसीजन नहीं है। यहां ऑब्जेक्टिविटी दो दफा आ रहा है, एक दफा आसिफ के पर्सपेक्टिव से है और एक दफा काशान के पर्सपेक्टिव से है। Then the professional behavior, that is, if he doesn't include it, it will be misleading other partners. And this will be again a discredit to the profession also. So uska jo professional behavior hai कि the material fact, it has to be disclosed. उसको hide नहीं करना। तो तीन यहां पर उसके इफेक्ट हो रहे हैं काशान को, एक उसकी इंटेग्रिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, और तीसरा प्रोफेशनल बिहेवियर। मार्क्स कहां पर हमने इसको बताए थे? 7 मार्क्स, इसमें से प्रॉब्ली 2 जो है वो तकरीबन 3 जो है वो आसिफ के पर्सपेक्टिव से, और बाकी जो है दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ काशान। इज द पॉइंट क्लियर जी? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब इस तरह का सवाल बड़ा रेगुलरली आ रहा है, दैट इज हमें डेटा दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसका गैप कहां है। आपको याद है कल के पेपर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ओमिट किया था, ठीक है ना? कल एक क्वेश्चन हमने ओमिट किया था मोड बाइक्स का, जो मैंने कवर नहीं करवाया था, और क्यों मैंने इसके साथ उस क्वेश्चन को लेना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस की नौयत एक है। इसी तरह मैंने वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन आज इसके साथ ज्वाइन किया था, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है हमें आज इसमें से एक कर लेंगे, दूसरा हम इसके साथ कोरिलेट करेंगे ताकि दोनों एक तरह के क्वेश्चंस आ जाए। आइए देखिए क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या हमें बता रहे हैं। Nirapani has emerged as a beautiful new tourist spot due to the creation of a small dam that is about 5 hours drive away from Islamabad. अब आपने उसकी मार्केट एक आपको पता चल गई जो आगे जाकर है कि this is probably very close to Islamabad, so most of its customers will be in this vicinity. It offers scenic views of green mountains and blue water. Nirapani has already attracted 3 hotels: Premier Hotel, Star Hotel, and Nilapani. They charge rupees 10,000, 3,000, and 800 rupees a day respectively. अब ये प्राइस डिफरेंस एक्चुअली आपको क्या दिया गया है? यू रिमेंबर जेनेरिक स्ट्रेटेजीज, डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट। तो एक बीच में जो 3,000 है वो तकरीबन हाइब्रिड पर है, और एक डिफरेंशिएशन की तरफ है, और एक 3। इनमें से किसका कस्टमर कॉस्ट कॉन्शियस होगा? आखिरी 2। 3,000 वाला भी शायद कॉस्ट कॉन्शियस होगा, लेकिन जो 10,000 वाला है वो कॉस्ट कॉन्शियस नहीं होगा, वो डिफरेंशिएशन कॉस्ट। ठीक है? The rooms are all of same size with a capacity of 4 persons. About 3 days stay is usually enough to cover all the activities that include boating, hiking, horseback riding, and for rupees 2,000 each. तो अगर आपने कोई टूर पैकेजेस बनाने हैं तो आपको बता दिया गया कि आप कहां पर अपने ऑफर्स को ऑगमेंट कर सकते हो, कि you can offer these as a part of a pack, may be free,
or maybe at some discount or something. This is something which can augment your offers to the customer. It also has small restaurants around the dam that offer unique food experience. It is no surprise that Nilapani is quickly gaining attraction among weekend travelers. Although it must be said that the roads do not extend out to the spot yet, and an experienced driver is needed to tackle the challenges of the commute. Toyota GLI or Toyota Prado are recommended for the journey and can be rented out for a return journey from car rental companies for rupees 10,000 and rupees 35,000 respectively. तो ये स्पेसिफिकली नीला पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वहां पर गाड़ी पर पहुंचना शायद मुश्किल है, तो उनको हायर करी. तो इन एडिशन टू द रूम रेंट्स, द कस्टमर हैज टू पे either use GLI 10,000 or either use Prado for this is additional cost of 35,000. अगर हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट मार्जिन, तो हमें पता होना चाहिए एक तो रूम रेंट है और दूसरा ये कम्यूट करने के लिए उसे ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. और बाकी वो जो हॉर्स राइड्स वाले हैं वो सेपरेट है, वो कोई नेसेसरी कॉस्ट नहीं है. ये दोनों नेसेसरी कॉस्ट है, ये हम ऑगमेंट कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं एज अ फीचर. Holiday Travels is a well-established local tour operator. HT wishes to capture the growing market for Nilapani and has already conducted site and market research. It was found that a couple of travel companies who are direct competitors of HT, जिस कंपनी का हम बात कर रहे हैं, have already discovered the spot and are offering following 4 persons package for 3 days. इसके एक सवाल में हमने गैप्स ढूंढने होंगे, तो हमें यह बता दिया गया कि क्या मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और कहां पर हमारे पास अभी गैप्स हैं जो हम ऑफर कर सकते हैं टू द कस्टमर. ये वो पैकेजेस हैं जो कि हमारा कंपेटिटर ऑफर कर रहा है. इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रीमियर होटल की ऑफर भी है, स्टार होटल की भी है और नीलापानी की भी है. ST also wishes to develop 3 days weekend package for all 3 hotels with minimum 20% profit on each package. अब requirement देखिए, provide all the 4-person package options possible with respect to hotel and vehicle type and highlight the gaps in the market. अब बोर्ड पर देख लीजिए, हमारे पास यहां पर इस वक्त ये 4 जो ये इस वक्त अवेलेबल है, 1, 2 and 3. ये वो जो HT ऑफर कर रहा है. प्रीमियर के लिए वो प्रोडो के साथ ऑफर कर रहा है और हमारे पास गैप क्या है, प्रीमियर होटल विद Toyota GLI. Let's evaluate here. Do you think it will work out? Premier hotel, they're already offering with Toyota Prado. Gap है जो यहां पर अवेलेबल है. Do you think कस्टमर की नेचर समझें, do you think it will work out? वो डिफरेंशिएशन कॉन्शियस है, वो शायद GLI सर्विसेज पर एक्सेप्टेबल उसको ना हो, उसे प्राडो में ऑफर कर रहे हैं, उसके लिए कॉस्ट प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, वो शायद इसके लिए अट्रैक्टिव ना हो. तो ये जो पहली प्रपोजल हमारे पास गैप की है, ये शायद हमारे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट का जो कस्टमर है वो कॉस्ट कॉन्शियस नहीं है, वो डिफरेंशिएशन कॉन्शियस है. तो वो शायद इस गैप को हमें ब्रिज करने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज कस्टमर के साथ ये रेलेवेंस नहीं. डू यू अंडरस्टैंड दिस? बोलिए बेटा. ठीक है, दूसरा गैप देखिए, स्टार होटल रूम Toyota Prado. दिस इज द गैप, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफर कर रहा है उसको स्टार रूम होटल एंड Toyota GLI. ये हाइब्रिड है कस्टमर, या ये गैप अवेलेबल है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कितना कस्टमर है जो इसको अफोर्ड कर सके. पहले के लिए तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, लेकिन ये कस्टमर हाइब्रिड है, इसमें से कुछ शायद हमें थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि इस सेगमेंट का जो कस्टमर है क्या इस फैसिलिटी को वो अवेल करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा. तो यहां पर हमें ये जो गैप है, दिस इज
a possibility. लेकिन इस गैप को हमने ऑलरेडी रूल आउट कर दिया है बिकॉज ये कस्टमर कॉस्ट कॉन्शियस नहीं है, ये डिफरेंशिएशन कॉन्शियस है. और ये जो सेकंड गैप है, इट इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज बट इट नीड्स सम मार्केट रिसर्च कि जी क्या इसमें से कितने जो कस्टमर है वो इसकी तरफ शिफ्ट होने के लिए तैयार है. लुक एट द थर्ड वन. ऑलरेडी ऑफर्ड है नीला पानी, और याद रखें ये 800 रुपीज पर डे पे था. उसे ऑलरेडी ऑफर किया गया है टोयोटा प्राडो. हम उसे ऑफर करें नीला पानी टोयोटा GLI. डू यू थिंक इट विल वर्क? डू यू थिंक दिस विल वर्क? नहीं. क्यों? ओके, तो उसके पास तो प्राडो अगर गया तो वो 35,000 कॉस्ट है, और उसने गाड़ी यूज जरूर करनी है. वन ऑफ द मेथड टू कम्यूट ही हैज टू यूज. उसका जो कंपेटिटर है उसने ऑफर की हुई है वो चीज जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. तो इन तीनों में से बेटा जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो ये सिक्स्थ ऑफर. दिस इज सॉरी, उसे GLI ऑफर. दिस इज वेयर आई एम सो सॉरी, so sorry, I have to. इसमें से प्रॉब्ली हमारा जो सबसे लीस्ट अट्रैक्टिव गैप है वो ये है, क्योंकि ये कस्टमर कॉस्ट कॉन्शियस नहीं है, ये काम नहीं करेगा. ये जो है इट मे और मे नॉट. यहां पर ये जो गैप है, यहां पर ये जो गैप, सॉरी, ये कभी भी काम नहीं करेगा बिकॉज ये कस्टमर बहुत ज्यादा कॉस्ट कॉन्शियस है, और वो 35, आप सही कह रही, वो 35,000 पर अवेल उसको नहीं करेगा. ये जो ऑलरेडी प्लान चल रहा है यही वर्केबल है. तो इन तीन में से हमें जहां पर ऑप्शन नजर आ रही है, दिस इज अ नो, दिस मे और मे नॉट, दिस इज सर्टेनली नॉट गोइंग टू वर्क. और हमें अगर कंपीट करना है इसके लिए तो वी हैव टू गो इनटू दिस सेगमेंट. आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू यू? ठीक है, बोले ठीक. अब मैं इससे आगे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सवाल और जो पिछले पेपर का सवाल था उनको मैं कल शुरू में दोनों को इकट्ठे लेना चाहूंगा. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये और प्लस आप विंटर का जो पेपर है 2021 का उसे कल अपने पास रखिएगा, ताकि वहीं से यहां से और फिर हम उससे अपनी बात को शुरू करें. कल मैं आपको जो वर्ब्स की लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस मैं आपको एक इंफॉर्मेशन वो दे रहा हूं कि अगले टर्म में बेस्ड ऑन द 3 अटेम्प्ट्स व्हिच आर द इंपॉर्टेंट एरियाज. ठीक है. आज मैं थोड़ा सा क्यों, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग मैसेज बिकॉज देयर सम इश्यूज गोइंग आउटसाइड and we have to, I think, probably get back as quickly as possible. Dear students, today we have completed the second session of exam focus revision session, CFAP strategy and performance measurement. There is no doubt sir has delivered the course at utmost level. He has not only revised the syllabus but also made it simple to understand. It is evident that sir has given his best in such short period of time. Please give him a big round of applause. Thank you, sir. Thank you, sir. CFAP 5 text planning and practice session will be conducted tomorrow on May 10 from 10 a.m. to 5 p.m. Till then, take care. Allah Hafiz. WhatsApp number मेरा ले लें. If you can solve, you can also send me to WhatsApp 034 334 4266 49. You can always reach me through this number. So PDF scan करें, picture में
0 double 6 4 4 2